Welcome everyone to Damanpreet's physics classes. We are back with new topics, that is energy stored in a capacitor and common potential. These are the closing topics of our chapter electrostatics in class 12. Energy in a capacitor कितनी store होती है and common potential, right? The concept of common potential. जैसे बच्चे question पूछते हैं कि अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा? No, there is a concept of common potential that will answer you these questions. Let's do that. Okay, to find out the energy that is stored in a capacitor, right? We need to formalize it. How do we do that? Let's take the two sheets of the capacitor, two parallel plates. I have a plate 1 and another plate 2, right? And a battery is connected to both of these. Battery will charge the plates of the capacitor. Now how does it happen? The positive terminal of the battery is connected to the first sheet and negative is connected to the another sheet. So what is happening? The electrons from the first plate will be extracted and they are stored in the second plate. Extracted, stored, extracted, stored. So whatever is the positive charge stored in the first sheet of the capacitor, the same amount of negative charge will be stored, right? So what do we have the specifications of a capacitor? The capacitor parallel plate with capacitance C having a charge Q to which it has been charged and the potential difference V applied across it. तो जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करा उसके कारण C कैपेसिटेंस वाले जो भी हमारा कैपेसिटर है उसके ऊपर हमारे पास Q चार्ज स्टोर हो गया. दिस इज़ ऑल विच इज़ हैपनिंग, राइट? सो बैटरी क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है इसको चार्ज करने में एंड ये जो हमने वर्क डन किया उसके कारण इसमें चार्जेस स्टोर हो गए एंड देयरफॉर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई. पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज चार्जेस इसके ऊपर जाके स्टोर हो गए, दे आर नॉट मूविंग एनी फर्दर. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो निकाली है, ना कि जो वर्क डन हमने किया. ठीक है, सो कैसे करेंगे? प्रोसेस हमें वर्क डन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? विल फाइंड आउट अ स्मॉल वर्क डन टू मूव चार्ज डी क्यू. कहाँ पे मूव करना है हमने चार्ज डी क्यू? ओवर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. किसी भी प्लेट पे डी क्यू चार्ज स्टोर करने के लिए मुझे कितना एफर्ट करना पड़ा, वी विल फाइंड दैट. देन वी विल इंटीग्रेट दिस वर्क डन एंड फाइंड आउट द टोटल वर्क डन. किसके लिए हम निकालेंगे? सो विल फाइंड टोटल वर्क डन to store the charge capital Q. We have stored the charge capital Q on the capacitor. So ये हम इसके ऊपर store करने के लिए इसको integrate कर देंगे. So this work done will be supposed to be its potential energy of the capacitor. ठीक है? Let's do these processes one by one. Okay. First step is कैसे निकालेंगे हम small work done? The potential difference that V is applied है क्या चीज़? This is the work done to move unit charge. Unit charge को move करने का effort होता है. कहाँ से कहाँ? From one plate to the another plate. ये work done है. तो अगर ये unit charge को move करने का work done है तो dq को move करने का work done क्या होगा? dw, small work done. This is V dq. कैसे आया देखो. सो अगर मेरे पास यूनिट चार्ज है तो उसको मूव करने का एफर्ट कितना है? टू मूव उसका एफर्ट कितना है? दिस इज़ V. सो dq का एफर्ट कितना होगा? व्हाट इज़ dq का एफर्ट? दिस इज़ V इंटू dq. दिस इज स्मॉल dw, राइट? सो V हमारे पास कितना है? एज V इज इक्वल टू Q बाय C, चार्ज बाय कैपेसिटेंस. ठीक है, हमने मिड में कोई भी वैल्यू ले ली. मिडल में हमारे पास Q चार्ज भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, स्मॉल q ले लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू. द कैपेसिटेंस विल ऑलवेज रिमेन C. तो हमने ये ले लिया Q बाय C. नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू. व्हाट डू वी गेट?
So after putting the value of the V Q by C, we get the small work done dW is equal to Q by C dQ. So total work done, second step क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, put the values. Now limits क्या है हमारे पास, limits है Q will be 0 जब हम initially start करेंगे, to Q is equal to capital Q जहाँ पे हम end करेंगे, ठीक है. So starting value, ending value, lower limit, upper limit. Put that. C is a constant in any situation. जब 0 था तब भी capacitance C थी, जब चार्ज Q स्टोर हो गया तब भी capacitance C है. So 1/C बाहर आ गया. So Q dQ, इंटीग्रेट करा इसको, this is Q square by 2. Put the limits, we get this value. So potential energy which is equal to work done becomes Q square by 2C, right? So ये तो आ गया Q और C की terms में, हम इसको QV and CV की terms में भी निकाल लेते हैं, ठीक है. So we'll get 3 formulas for the same thing. So as we know Q is equal to CV, so potential energy कितनी आ जाएगी, Q square by 2C हमारे पास पहले आया था, Q की वैल्यू पुट कर दो, C से C cancel, so this is half CV square. Then Q square by 2C initially जो था उसमें C की वैल्यू पुट कर दो Q by V, we get in terms of QV. So this is in terms of QV, in terms of CV, in terms of QC. So these are the 4 formulas for the energy stored in a capacitor when we charge it to Q value, right, capital Q, right. So the next topic that we are covering in this video is common potential. Let's do that. Okay, to understand the concept of common potential, I have taken 2 bodies with charge Q1, capacitance C1 and potential V1. Another body of charge Q2, capacitance C2 and potential V2. ठीक है. So I have imagined that the potential of first body is greater than second, V1 is greater than second. Equal तो है नहीं, obviously एक बड़ा होगा एक लेस होगा, तो हमने बड़ा किसको सपोज कर लिया, फर्स्ट के पोटेंशियल को, ठीक है. Now अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर देती हूँ बाय कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, कनेक्टिंग वायर इज ऑलवेज कंडक्टिंग. तो जब मैं इनको कनेक्ट कर देती हूँ and V1 is greater than V2, तो क्या होगा, the charge will start flowing from high potential body to the low potential. Till कब तक ये flow करेगा, till I have a condition कि V1 becomes equal to V2, that is V जिसको हम बोलेंगे common. ऐसा नहीं है ये खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है दूसरा बहुत ज़्यादा भर जाएगा. These all things will happen till they both acquire the same potential. That is, I will have the condition of this body will remain at first capacitance C1, the charge will be different and the potential will become V. The another body will remain as such, shape will remain as such, the capacity will remain C2, but the charge becomes Q2 dash and its potential becomes V, right, after sharing of the charges, and they will share a common potential. So whether they are connected or disconnected, the situation remain as such, right. So to find out what is the value of V, what we use the concept is the common thing between the two. Common thing is the property of charge. क्या है property of charge, कि the charge of an isolated system will always remain conserved constant. System का हमारे पास जो charge है वो हमारे पास क्या रहेगा, constant and conserved. So here my system consists of the 2 bodies 1 and 2, 1 and 2. बाहर से कुछ अंदर नहीं आया, अंदर से कुछ बाहर नहीं गया. They constitute isolated system. अब इस isolated system में जो charge पहले था sum, दोनों का sum पहले जो था before sharing and after sharing, Q1 dash plus Q2 dash, it will be same. ठीक है, let's do that.
So, applying the property of conservation of charge through this property, the charge of the system before sharing and after sharing becomes equal. So, Q का formula लगा दिया CV. So, 1 है तो C1 V1, 2 है C2 V2 becomes equal to C1 times the common potential plus C2 times the common potential. Taking V as common, so what do we get? This one, and divided by this C1 and C2, we get the formula of the common potential. So common potential of the two bodies sharing the charges becomes this much. तो शेयर कब तक करेंगे? जब तक हमारा पोटेंशियल कॉमन नहीं आ जाता, एंड कॉमन इज दिस वे, right? So this is all we have in this video. And if you have any question, doubts or concerns, you have a comment box, you can write back to me and I'll get back to you as soon as possible. And thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Please subscribe, like and share the channel and the videos. Thank you so much. Keep watching.